all in my other video, and today video is about military pharmacist and other paramedical, the paramilitary force system. There are a lot of jobs for pharmacists. So this video basically is going to be in English first, then Hindi, because many of you always comment sometime in Hindi, sometime in English. So watch the full video so you can understand what are the requirements for this job. So this is basically perspective from India and Australia. So this is the same job in India also, and you can also do in Australia. And so we'll see it to their information, all those things. So first, basically, if you want to work, so then you have to clear one of their examination. And the examination mostly they call the MCQ based exam, and after that you have to go some physical examination, your height, and you have to go some running, this and that. This is like similar to the military if you want to go for any army recruitment. So this is a similar kind, but they are going just for a basic training, not that much the extensive as they are going for the army persons. So after that you can work as a pharmacist. So we are basically pharmacists. What is the role of pharmacists in these areas? So normally, like army, they work in army. Sometimes they also work in like Air Force. They also work in the Coast Guard. They also work in Navy. So these are the pharmacists basically when during a war, without war also, So all the army persons, they are working there. They need proper health care. So if they have any problem for any person, they have to just go to the clinic, and clinic will be a doctor, nurse, pharmacist, lab technician. So everyone will be there. So basically, there is basically a small setup, we can say, based on the how many people are working in that particular area. Hospital pharmacists, so they have to dispense all the medication as per the prescription given by the army doctor, or they have to give some the counseling point to all of them, how they have to take the medications, and more importantly, they also see some of like how they have to store these medications, as well as some of the vaccines they are coming to given to them. So salary mostly in India is like 40,000 to 60,000, and the basic requirement, you must be a registered pharmacist. Registered pharmacist means you minimum have a diploma pharmacy, you are a B Pharm, or you are a PharmD, and then you can sit in the exam. Once you clear the exam, then you have to go for a physical examination. After that, you have to go for some training. Then you can start working in this. This is very simple. This is for India. But if you want to work in Australia, so this is very sensitive job. Basically, this is not like anyone can work. So those are very loyal. They must be a citizen. Basically, for example, someone want to work in Indian Army, he cannot work because if he must be a Indian citizen, then only can fill his the form and all the requirement. Then only you have become a pharmacist in Indian Army. The same for Australia. So if you want to work in certain area in army, there are many central government jobs. So you must be a Australian citizen, then only you can apply. Even if you are a Australian PR holder, you cannot apply this kind of job. So the requirement for to become pharmacist in Australia, first I already told you many times, so I'm going to repeat again, because if some of you are might be a new subscriber on the channel. So first you have to go for a skill assessment, then you have to clear a CAPS exam. CAPS exam is a MCQ based exam, and you can clear from your country, wherever you are living. Then after that, you have to file your visa. Once you got your visa, you can be in Australia, and then after that you have to work and live in Australia at least 4 years. Then you can be an Australian citizen. After that, you can be a work in army, or otherwise there is no chance to work in army. So now I'm going to discuss in Hindi. So basically, अगर आपको आर्मी या जितनी मिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं, वहाँ आपको अगर काम करना है, तो बेसिकली वहाँ पर एक आपको एक एग्जाम देना होगा. उस एग्जाम क्लियर करने के बाद फिर आपको जो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, उसका फिर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, वो सब आपको करने के बाद ही आपको इसमें जॉब मिलती है. तो बेसिकली इसमें जो रिक्वायरमेंट होती है, आपको जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना पड़ता है. आप डिप्लोमा फार्मासिस्ट हो, या बी फॉर्म हो, या फार्मडी किया हो, तो बेसिकली कोई भी अगर आपने डिग्री किया हुआ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं अपनी कंट्री के अंदर, तो आप लोग एज ए आर्मी के अंदर आप लोग जॉब कर सकते हैं. और ये बहुत ही शानदार जॉब है, मैं कहूँगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इंटेंसिव नहीं रहती है, मगर बहुत ज़्यादा कभी कभी लड़ाई भी होती है, तो उस टाइम पे के भी आपको प्रिपेयर रहना पड़ता है. तो आपको बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है कि अभी
कि वर्क सिचुएशन में भी आपको काम करना पड़ सकता है, वहाँ कैसे आपको ट्रीटमेंट देना है, और अगर जरूरत पड़ी तो आपको ये बॉर्डर पर दुश्मन से जो है लड़ना होगा। पर बहुत सारी जो पोस्टिंग्स होती है ऐसी नहीं होती है। अभी आप फार्मासिस्ट तो आप दिल्ली में काम कर रहे हैं, मुंबई में काम कर रहे हैं, जो मेट्रो सिटीज़ में, मगर इसमें जो है आपको कहीं भी जो रिमोट एरिया होता है वहाँ पर कोई नहीं होगा, कोई आर्मी का वहाँ पर जो कैंप होगा, या फिर जो है वहाँ पर जो है कुछ ऑपरेशन चल रहा होगा आर्मी का, तो वहाँ पर हर जगह पर एक हॉस्पिटल होता है जहाँ पर आर्मी होगी या कोई भी जो पैरामिलिट्री जो फोर्सेस हैं जहाँ भी जाएगी वहाँ पर एक इनका अपना सेटअप होगा। तो किसी को कोई ज़रूरत पड़ती है तो जो है वहाँ पर डॉक्टर होगा, फार्मासिस्ट होगा, नर्स होगा, लैब टेक्नीशियन होगा, तो वो सारे का सारा पूरा ट्रीटमेंट उनको करते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी लोग होते हैं, जो लोग रिटायर हो जाते हैं, तो उन लोग का भी ट्रीटमेंट देते हैं, उनकी पूरी फैमिलीज को भी, जो वही लोग उनका अपना हॉस्पिटल होता है तो वहाँ पर जो है वो लोग उसका ट्रीटमेंट देते हैं। तो सेम प्रोसेस है, मतलब इंडिया का ये प्रोसेस है। और अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में अगर आपको जॉब करनी है एज ए आर्मी के अंदर एज ए फार्मासिस्ट, बहुत सारी जॉब्स यहाँ पर आती रहती है। यहाँ पर भी तो आर्मी हो गया या जो है एयरफोर्स हो गया या नेवी हो गया, इन सभी जगह पर इंडिया में भी होती है, ऑस्ट्रेलिया में भी होती है। पर ऑस्ट्रेलिया में अगर आपको जॉब करनी है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो उसके लिए आपको सिटीजन होना मस्ट है। तो सिटीजन होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो पहले स्टेप ये है कि आपको जो है अपना स्किल असेसमेंट करवाना पड़ेगा पहले। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना कर डाली है, तो आप लोग देख सकते हैं इसके लिए स्किल असेसमेंट फॉर फार्मेसी इन ऑस्ट्रेलिया अगर डालेंगे तो वो आ जाएगा वीडियो, मैंने इसको लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। फिर नंबर 2 स्टेप आता है कैप्स एग्जाम एक होता है, तो वो आपको MCQ बेस एग्जाम होता है, वो आपको अपनी कंट्री में आप दे सकते हैं। वो बहुत सारे सेंटर्स हैं, उसके 4-5 सेंटर हैं इंडिया में, तो आप वहाँ पर जाकर उसको सेंटर पर आप लोग दे सकते हैं ये एग्जाम। और ये एग्जाम पास करने के बाद फिर आपको यहाँ पर वीज़ा फाइल करना होगा। वीज़ा तो दो तीन तरह का होता है। तो होता है जैसे कि आपको वर्किंग वीज़ा मिला या आपको अगर PR वीज़ा मिला, तो आपको PR वीज़ा मिला जब आप यहाँ पर रहेंगे तो कंडीशन ये है कि आप 4 साल यहाँ पर रहेंगे ऑस्ट्रेलिया में, और उसके बाद फिर आप सिटीजन बन जाएंगे। जब आप सिटीजन बन जाएंगे तभी जो है आप ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाली जॉब्स जैसे कि आर्मी वगैरह की बहुत सेंसिटिव जॉब्स होती हैं ये, तो फिर वो वाली जॉब आपको मिल सकती है। अदरवाइज आपको ये 4 साल जो होंगे आपको किसी रिटेल फार्मेसी में या किसी हॉस्पिटल में आपको जॉब मिल सकती है फार्मासिस्ट की। और मोस्टली जॉब्स जो फार्मासिस्ट की वो मिलती है रीजनल एरियाज में, और सैलरी जो है स्टार्टिंग में मिल जाती है जो है $30 से $35 पर आवर, पर ये जो $70 तक पर आवर मिलती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर एज फार्मासिस्ट को, जो एक्सपीरियंस फार्मासिस्ट होते हैं। तो जितने भी माइग्रेंट फार्मासिस्ट हैं उनको सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि उनको जो है रीजनल एरिया में एज फार्मासिस्ट जॉब मिल सकती है। और हाँ, जो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होती है ऑस्ट्रेलिया में, वो आपको 7 बैंड ईच लेकर आना होगा। जो चारों जो है जो एरिया होते हैं इंग्लिश की रिक्वायरमेंट के, IELTS में या PT या OET, ये 3 टेस्ट होते हैं। तो आपने इसमें से कोई भी अगर पास कर लिया तो वो भी आपके लिए मस्ट है, 7 बैंड इक्विवेलेंट। उसके बाद ही आप लोग माइग्रेशन कर सकते हैं। तो ये मैं भूल गया था बताना। तो ये था इसका वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।